Namaskar. Welcome to Ek Samvaad at Arunima Ankuran. We are celebrating National Sports Day with a conversation about the role of a sports psychologist. Our guest today is Mr. Karanbir Singh. He is a senior sports psychologist at Abhinav Futuristics Private Limited. Welcome to Ek Samvaad, Karan, and thank you so much for joining us. It's a pleasure to have you here. Thank you, Dr.Pragya, Mathur, for having me on your platform, Ek Samvaad, by Arunima Ankuran, and on this very special occasion of National Sports Day. Thanks once again for having me. Welcome. A word about Arunima Ankuran. This is an initiative for positive social change through self-development. The goal is greater well-being and happiness for all. At Arunima Ankuran, we believe that each person is unique and special in some way, that each person can make a difference, that each person can have an impact, and that's what inspires us to keep going. So National Sports Day is celebrated every year on the 29th of August to honor the legendary hockey player Major Dhyan Chand on his birthday. The theme of National Sports Day 2024 is Sport for the Promotion of Peaceful and Inclusive Societies. This theme highlights how sports can bring people together, promote understanding, and build strong communities. Sports encourages teamwork, respect, and unity, helping to break down barriers. There are a lot of social and psychological benefits of playing sport. So we encourage children and we encourage parents to support children who play sports because they teach life skills like nothing else can. Arunima Ankuran particularly supports India's sportspersons beyond the podium too through Mind Gym at Arunima Ankuran. And we also support Khelega India, Khilega India, and encourage people to participate in the Fit India movement. We are so delighted to have with us today Mr. Karanbir Singh. He's a sports psychologist, he's a TEDx speaker, certified shooting sports psychologist, and founder of Sports Psyche Talk podcast, India ka apna sports talk show. So I'm absolutely delighted to have him here today. The world is the great gymnasium where we come to make ourselves strong, and it gives me immense pleasure to extend a warm welcome to Karanbir Singh here. So Karanbir, let's start from the beginning. Talk to us about the training that a sports psychologist like you had to undergo, and what is your role now? So, ma'am, I was fortunate enough to, first of all, join this master's course at GNDU, Rangde University, Amritsar, Department of Sports Medicine and Physiotherapy at that time. Now it is Department of Sports Sciences and Medicine, and it comes under the Ministry of Youth, Fair and Sports. So when I started, it was the only university providing sports psychology master's course in India. Okay. So, and I was fortunate enough to be in touch with the people around, especially my mentor, Dr. Sonia Kapoor. She led me to, in terms of the provided me guidance, and discussed about the scope of sports psychology going to be in future and how important it will be. So for me, it was very fascinating because there was like hardly a sports psychologist that time. And there was a very big article in Times of India published where Dr. Sonia Kapoor interviewed by Times of India, and she was like, there's a dearth of sports psychologists in India. So, and I joined the course, and yes, of course, from training per se, I'll say at that time, since the awareness is not is of that level at that moment, it was not like something everyone looking for a sports psychologist. Nowadays, it's a buzzing word in the market. Actually, everyone is looking for a sports psychologist. Even the parents also have somehow gained this awareness that psychology or mind of the children is really very important, or the athlete is really very important. So during my curriculum only, I was posted at health center. We have health center within the university vicinity, and I was posted over there along with the other students, those who were training like physiotherapy, sports nutrition, sports physiology.
Hmm. So we were posted in the sports, university sports department. I was posted in hockey, Hmm. where I covered the ONGC Cup and archery, also cycling, football. So Hmm. this is my initial days of training while even interacting with the uh, like it is sports national sports day. So I remember when I was posted in ONGC Cup. So I met with Sardara Singh, Shwender, Hmm. uh, Prabhjot, those who played for India a very long time. Hmm. 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 Uh, so this is my journey, and I have pursued my training in sports psychology in university only. Wonderful. So we are looking at very recently. We have just seen the Olympics happen, and there is a very, like you just said, बहुत awareness बढ़ गई है कि sportsmen need a psychological coach also in addition to the technical skills they are learning. So talk to us a little bit about the process because अभी तक बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं है कि what exactly a sports psychologist does. So tell us about where you work and what is the process you adopt and what are some of the tools in your kit. So, ma'am, this is particularly very true that many people still unaware of the process of sports psychologist. So nowadays, when we talk about psychology, and many people react in a very different ways. So whenever, just for an example, if you go to a party and you introduce yourself that you work in psychology and you're a psychologist, so some of them will be very uh, uh, fascinated by kind of field you are in, and they may approach you. They may ask you, okay, tell me about me, if you can tell about my personality and so on, if you can make some guesses and all. Yes, definitely, from awareness point of view, still we need to work on the awareness aspect. और उसमें अगर अप्रोच की मैं बात करूं, तो अप्रोच में एवरी साइकोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट have their own approach. Hmm. So abhi, if you are working on the kids of age 11, 10, 9, जो बच्चे हैं, Hmm. of that age, तो आप पेरेंट्स को ज्यादा टारगेट करते हो, and you try to apply your intervention through the parents, and you also counsel more parents than the kid actually. वो बच्चे को आप क्या समझाओगे उस एज के ऊपर. And objective also, if we talk here about little bit or long term athletic development of the athlete, which is a very much scientific model, Hmm. it is around us only. Hmm. तो उसमें देखा जाए तो बच्चे का ज्यादा फोकस रहना चाहिए ट्रेनिंग में, हाउ ही कैन डेवलप दैट इंटरेस्ट इन द ट्रेनिंग. तो ट्रेनिंग शुड बी इंटरेस्टिंग, Hmm. जहाँ पे बच्चा जाए और उसको मजा आए करके ट्रेनिंग. उस तरह के कुछ ट्रेनिंग गोल्स ऑब्जेक्टिव होने चाहिए. Hmm. और पेरेंट्स को ज्यादा वो प्रेशराइज नहीं करना चाहिए टाइप ऑफ. बच्चे को ये नहीं कि हाँ मेरा बच्चा अभी 11 साल का है Hmm. और वो मेडल जीतना चाहिए, उसको यही करना चाहिए. तो बहुत स्पोर्टिंग पेरेंट्स को ये समझने की जरूरत है. बहुत ट्रेनिंग इज नॉट समथिंग दैट एट दैट एज स्पेशली आप इसलिए बच्चे को ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं कि वो बच्चा आपके लिए मेडल उसी वक्त जीते. आप लॉन्ग टर्म में आपको सोचना है कि आपको कहाँ पे जाके उसको पीक पे पहुंचना है अपनी, स्पेशली दैट एथलेटिक सीलिंग वी टॉक अबाउट, जो उसका फुल पोटेंशियल है, तो वहां तक वो कैसे पहुंचेगा. तो पेरेंट्स को, सो दिस इज वन ऑफ द अप्रोच विद द यंग चिल्ड्रंस. एंड देन वी हैव दिस यूथ. तो उस यूथ में अगर बात करें, somebody 12 year old, तो उनका क्या होता है, कम्पिटिटिव एज भी स्टार्ट हो जाता है 12 साल की एज में ही. वो अपने एज ग्रुप में खेलते हैं. तो absolutely 12 से लेके 16 साल तक अब एक आप यूथ बोल सकते हैं कि दे आर जूनियर प्लस यूथ बोथ एज वेल. तो 12 से 13 साल, 14 साल तक आप ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव आपका, यू ट्रेन बेसिकली टू लर्न द स्किल्स. आपको सीखना है वहां पे. साथ साथ में आप अपने आप कंपटीशन खेलते हैं, तो कंपटीशन में आपके लिए अगेन जीतना इज नॉट रियली वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ यू गेन द एक्सपीरियंस. yes बट प्राइमरी फोकस शुड बी ऑन डेवलपमेंट ऑफ द स्किल्स. Hmm. तो अभी जैसे आई वर्क एट हाई लेवल, हाई टॉप लेवल एथलीट्स, elite athletes. Hmm. The past, I think, almost 5 years, I'm working on a youth primarily. Hmm. Very easy to work on a youth basically because their demand is also very difficult, different, and you have a lot of scope in terms of what you do as a sports psychologist on youth. तो अगर उसका 15-16 साल की हम बात करें, 12 से 15 साल तक तो बच्चे को सीखना ही चाहिए. एंटायर फोकस शुड बी ऑन गो टू ट्रेनिंग, कमिट योर गोल्स, ट्रेनिंग गोल्स,
learn every day and improve every day, and no need to worry about आप मेडल जीत रहे हो नहीं जीत रहे हो. But definitely that pressure comes from the parents, society, coaches, administration, managers. Hmm. तो साइकोलॉजी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. और साइकोलॉजिस्ट यू नो their role is very important, especially at that moment where kid is of 12, 13, 14, 15, they're growing also. Hmm. लड़कियों का ग्रोथ स्पर्ट आता है, लड़कों का ग्रोथ स्पर्ट आता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत सारे बॉडीली चेंजेस होते हैं. तो उसके बीच में बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है. तो बिल्कुल. डेवलपमेंटल चेंजेस जो हैं, Hmm. तो you will see kids coming and they may talk about small issues, कि मुझे उसने ऐसे बोल दिया, उसने मुझे सर ऐसे देखा, वो मेरे बारे में ऐसे बोल रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं. तो आपको उनको थोड़ा रैशनलाइज करना होता है. तो काउंसलिंग का बहुत मेजर रोल है. मेंटल स्किल्स का भी इम्पोर्टेंट रोल है वहां पे. आप उनको बोल सकते हैं मेडिटेट करो. हालांकि बहुत मुश्किल होता है, बच्चे उनका Hmm. माइंड उतना कंट्रोल में नहीं रहता, बड़ा मुश्किल होता है उनको वो सब चीजें सिखाना. बट स्टिल इफ यू आर लकी इनफ टू फाइंड समवन हु इज मोटिवेटेड, Hmm. तो आप उसको मेंटल प्रैक्टिस कैसे करना है, इमेजरी ट्रेनिंग है, सेल्फ टॉक है, आप ये स्किल्स, माइंडफुलनेस जैसी स्किल्स आप सिखा सकते हो, मेडिटेशन, ब्रीदिंग, ब्रेथ कंट्रोल टाइप ऑफ, Hmm. जो कि कन्वेंशनल मेथड्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स हैं विद इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी. देन कमिंग ऑन टू दैट 16-17 वाला फेज, जहाँ पे कंपटीशन बच्चे खेलते हैं, तो ऑब्जेक्टिव शुड बी दैट हाउ दे गो Hmm. एंड ट्राई टू compete ओवर देयर. तो उनकी कम्पिटिटिव एज चालू हो जाती है. Hmm. नाउ दे रियली वांट टू पुट देयर सेल्फ ऑन दैट तराजू, कि वो कितना है, मतलब उनमें वो कैपेसिटी कितना है. Yes. तो 15, 16, 17 पकड़ के चलो. They should target more and more competition, participate in maximum competition as much as possible, Hmm. and then you come back and set your training goals, reset your training goals, try to develop the areas of improvement Hmm. जहाँ पे आपको improvement चाहिए. Hmm. From I think अगर somebody start at the age of 10 or 9, Hmm. 18 ईयर तक आते कहते इजिली आप उनको 9 साल का 8 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है. तो Yes. उसके बाद आई थिंक दे आर अबाउट ऑलमोस्ट रेडी टू री यू नो रीच एट दैट लेवल ऑफ एलीट एंड प्रोफेशनल लेवल. उसके Hmm. आसपास वो पहुंचते हैं. तो Hmm. उनका जो कैपेसिटी है वो नियर पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, अगर कोई बहुत डेडिकेशन के साथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ट्रेनिंग करते आ रहा है. Right. क्योंकि ट्रेनिंग में आपको डेडिकेशन और कमिटमेंट बहुत चाहिए. बिल्कुल. बिल्कुल. और फिर they only participate to be consistent. 18, 19 onwards, they how they can consistently perform Yes. and gain that 1%, and win medal at national, domestic level, and also at international level. Hmm. Approach जो है that is going to be different for you if you don't understand the developmental phases of the kid. Hmm. तो यू मे ट्रीट एवरीवन द सेम वे. ओके, आ जाओ मैं टेस्ट कर देता हूँ, आ जाओ मैं काउंसलिंग कर देता हूँ, आ जाओ मैं ये कर देता हूँ, मेंटल स्किल सिखा देता हूँ. तो आपको ट्रेनिंग के कंसेप्ट, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के कंसेप्ट समझ आने चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि बच्चे का एज ग्रुप क्या है, Hmm. गेम कौन सा है, गेम की डिमांड कैसी है. भले आपने नहीं खेली है गेम, आजकल ये बहुत बात उठ रही है इंडिया में भी, तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी वैसे चालू ही हुआ है. Hmm. तो ऐसा बोला जा रहा है कि नहीं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट वही लो जिसने गेम खेला. ठीक है, लेना चाहिए. आई टोटली एग्री. Hmm. But the point here is, for me, it is not necessary that I should go and play boxing. But if I spend enough time with boxers, so I can understand their game and their demand as well. Hmm. Because we have that intellectual capacity to understand the nuances of the sports. तो ये एक बात है. तो अप्रोच बेसिकली कोई फिक्स्ड अप्रोच नहीं है. ओवर द इयर्स आपने जो थ्योरेटिकली सीखा है, फिर एक्सपीरियंस जो आपने सीखा है, Hmm. तो experience is very vital here, and Hmm. how you develop your approach. It shouldn't be very fixed और jargon based नहीं होना चाहिए approach. हाँ, I totally agree with that. That's a very important thing. जितना आप simplify करके उसको share करेंगे, that is good for everyone. So we talk a lot, about high performance athletes and how the differentiating factor is the mindset. So as a sports psychologist, Karan, how do you assess a champion mindset? The one very factor is
the positivity. I think I'll say here they are very positive, and resilience is of a very high level. Their commitment levels are really very high, and those who I'm talking about champions only, and they exactly know what they are doing. They know they are very aware of their process, their training goals, their long-term goals, short-term goals. They train accordingly and very focused, actually, confident, focused. So these are some of the traits. Obviously, when I say commitment, so motivation is also somewhere there, because you can't commit anything if you don't have enough motivation. But the positivity stands out. Uh, they are very, really well mentally prepared all the time. They have pretty good control, confidence, and resilience, I'll say, among the champions. Obviously, humble. They're also very humble. I think that you need to be very humble also. When athletes, those who are humble enough, humble not in the sense of का game में humble हो जाओ. आपको अपने opponent के साथ कोई humble होने की जरूरत नहीं है. There you have to have this, kind of this attitude. Like ओलंपिक्स की हम बात करें, तो अभी ओलंपिक्स में हमने इवेंट्स देखे. मैंने 100 200 मीटर्स को ऑब्जर्व किया वो क्लोजली. लोग तो टाइमिंग देखते हैं, बट फॉर मी द बिहेवियर ऑफ द एथलीट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई ऑब्जर्व इज द बिहेवियर ऑफ द एथलीट. तो मैंने जो देखा कैसे, आप 100 मीटर अभी भी जाके दोबारा देखो, तो जैसे उनकी एंट्री होती है तो कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई कुछ तो कुछ कर रहा है. मतलब दे हैव देयर ओन रूटीन. दैट इज देयर एटीट्यूड एक्चुअली. एंड अभी एथलेटिक्स में मैं काम कर रहा हूँ, तो यंग जो 14 15 साल के एथलीट हैं, तो उनको मैं यही सिखा रहा हूँ कि डूड यू हैव टू हैव द एटीट्यूड, बिकॉज यू डोंट गेट एनीथिंग विदाउट दैट एटीट्यूड. एटीट्यूड इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यस आई एम द वन. I am the one who is chosen actually, who will win. तो वो होना, आप जीतो हारो वो आउटकम बात की बात है, बट having that something around your this sphere, around that mind is very very important. तो लाइल्स ने जैसे अभी वो हालांकि ही वॉन. देयर इज अनदर गाय फ्रॉम जमाइका. दे बोथ इन 100 मीटर उनका दोनों का टाइमिंग सेम था, 9.79 था. बट बिकॉज ऑफ दिस वन फ्रैक्शन 0.1 की वजह से अमेरिकन यूएसए स्प्रिंटर वॉन द गोल्ड मेडल. If you closely watch, they were like praying, they were talking to themselves. Lyles are continuously talking to himself. So his energizing technique on the same time, the technique which helped them to, be focused, because they have a task at hand to do. So they were breathing also, they were a little bit jumping also, but right before their start, all of them are somehow breathing, and they are talking, and they are just following their routine, their heads down, eyes closed, and waiting for that gunshot, and then they launch themselves from that block. तो यही सब चीजें ऑब्जर्व करनी होती हैं एज ए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट आपको. देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ एथलीट्स, एंड यू अंडरस्टैंड योर एथलीट, एंड इफ योर एथलीट इज डूइंग समथिंग और वो उसको हेल्प कर रहा है, आप उसको चेंज नहीं करना है. आप उसको प्रमोट करो, ऐड कर सकते हो. कोई चीज जो उसको बॉदर कर रही है, कोई परफॉर्मेंस में किसी वजह से उसको रुकावट आ रही है, तो उसको उस बैरियर के ऊपर आपको काम करने की जरूरत है. तो चैंपियन माइंडसेट वही है, द वेरी हाईली पॉजिटिव, commitment and resilient guys. These are, they know, they're very focused, they know what they're doing. When we talk about the younger lot, जो हमारे पेरेंट्स हैं और जो कोचेस हैं, what is the role that you have been playing, especially with relevance to the coaches? Does a sports psychologist have a role there also? Absolutely, I think it's a very massive role these psychologists have with the parents and the coaches, because these are the stakeholders we work around most of the time. Definitely, the athletes are the one we always target, but never forget that managers also, admin staff also. So we are not there to help only athletes. We are there for everyone. हम वहां पे, so we are there to help to develop the environment, mediating between coach and athlete, mediating between manager and the coaches. So we have a very pivotal role to play. We can never forget actually. Parents may be a type of parents, and there are parents who are
under involved, there are parents who are overly involved, there are parents, those are optimally involved. Hmm. तो आपको पता चलता है, जैसे पेरेंट्स हैं वो, मेरे साथ तो पिछले 10-11 साल में ऐसे हुआ ही है, बहुत बार मैंने देखा है पेरेंट्स हो तो पेरेंट्स दोज हु अप्रोच, Hmm. वन स्मॉल एग्जांपल, एक छोटी बच्ची 10 साल की, तो वो टेनिस खेलती है। Hmm. तो उनके पेरेंट्स ने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने लिंक्डइन पे प्रोफाइल देखा होगा, दे भी लाइक हमारी बेटी है, ऐसे ऐसे है, हम देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम से वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही है, वो बहुत रिएक्ट कर रही है ग्राउंड कोर्ट में, और Hmm. वो अच्छा नहीं खेल पा रही है। और स्पेशली कोई टफ ओपोनेंट आता है तो वो बहुत ज्यादा कॉशियस होके खेलती है और मिस्टेक करती है, फिर उसके बाद वो मोस्टली वो लूज करती है मैचेस को। तो मैंने थोड़ी उनसे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ली, बात की, उनके बारे में पूछा, उनकी फैमिली के बारे में पूछा। अ, तो उन्होंने, मुझे पता चला कि उन्होंने बेसिकली बचपन से ही सोच रखा था, दोनों कपल्स जो थे वो दोनों आईटी प्रोफेशनल्स थे। तो उन्होंने सोच रखा था कि हम अपनी बेटी को मतलब टेनिस प्लेयर बनाएंगे। वो दोनों टेनिस नहीं खेलते थे, उन्होंने कभी नहीं खेला, Hmm. बट दे वर वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस स्टोरी ऑफ विलियम सिस्टर्स। तो उन्होंने क्या किया, घर का पूरा माहौल चेंज कर दिया, हर जगह पे टेनिस ही टेनिस दिख रहा है, इधर फोटो टेनिस की, उधर फोटो। Hmm. तो कंडीशनिंग कैसे की उन्होंने अपने बच्चे की, तो पेरेंट्स भी लाइक बच्चों को भी एक इन्वेस्टमेंट की तरह ही समझते हैं, लेते हैं कि हमारा बच्चा यही बनेगा। तो पेरेंट्स के साथ काम करना इज वेरी ट्रिकी, टाइप्स ऑफ पेरेंट्स आर देयर। तो दिस वन इज ओवरली इन्वॉल्व विद द बच्चा, सब कुछ जानना चाहते हैं, फिर वो काउंसलिंग में क्या हुआ वो भी पूछना चाहते हैं। मैं बच्चे की काउंसलिंग तो नहीं की यहाँ पे, मैंने पेरेंट्स की काउंसलिंग की एंड दे वर वेरी हैप्पी। फिर उन्होंने अपने रोल को समझा, उन्होंने थोड़ा मॉडिफाई किया और उनको उसका रिजल्ट भी दिखाई दिया। ऐसे ऐसा एक बैड एग्जाम्पल भी है जहाँ पे कुछ साल पहले मैंने बच्चे के साथ काउंसलिंग कर रहा था, बच्चे के साथ वर्क कर रहा था। Hmm. तो मॉम जो थी वो बहुत उस वो थी कि मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है, तो वो बच्चे को पूछती थी, फिर वो मुझे फोन करती थी कि आप बताओ आपने क्या किया टाइप ऑफ। तो इवेंचुअली वो रिलेशन ही नहीं बना मेरा उनके साथ, क्योंकि जो पेरेंट थे वो बहुत ज्यादा इंटरफेयरिंग थे। और अंडर इन्वॉल्व पेरेंट्स हैं जिनको कोई लेना देना नहीं, बच्चा कहाँ पे है कहाँ नहीं, ऐसे। Hmm. तो पेरेंट्स का वहाँ पे कोई रोल ही नहीं Hmm. है। पेरेंट्स को ऑप्टिमली इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है, फाइनेंशियली, इमोशनली, मॉरली। Hmm. जरूरत से ज्यादा पैसे भी देना अच्छी बात नहीं, बच्चे बिगड़ बिगड़ जाते हैं उससे। कोचेस कोचेस आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर। तो टाइप्स ऑफ कोचेस आर देयर, तो कोचेस को आप बाईपास तो नहीं कर सकते, दे आल्सो want us to give as much as information possible, तो we make sure that confidentiality हम maintain करके बच्चे की जो information उसकी परफॉर्मेंस उसको हेल्प कर सकती है, उस तरह की हम कोई बात शेयर करें। फिर भी very difficult to satisfy coaches, and if you're lucky enough, like I myself been lucky enough, काफी कोचेस के साथ अच्छे रिलेशन रहे हैं अब तक। तो जब उनको, क्योंकि यू स्पेंड टाइम विद द कोचेस, यू आल्सो अंडरस्टैंड कोचेस के कोच कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो कैसे सोचता है, तो आपको थोड़ा थोड़ा एडवांटेज थोड़ा साइकोलॉजी का मिलता है, करे नहीं ऐसा है तो ये ऐसा होगा। Hmm. तो यू हैव टू यूज योर स्टिक टू योर एथिकल गाइडलाइंस ऑफ प्रैक्टिस एंड मेंटेन दैट कॉन्फिडेंशियलिटी, और मेक श्योर दैट कुछ भी गलत ना हो। Hmm. तो कोचेस का स्टाइल ऑटोक्रेटिक हो सकता है, मिक्स्ड हो सकता है, डेमोक्रेटिक हो सकता है। तो टाइप ऑफ कोचिंग स्टाइल, यू नीड टू अंडरस्टैंड द कोच एथलीट रिलेशनशिप, कोच का कोचिंग स्टाइल एंड लॉट ऑफ अदर स्टफ। Karan, while we are discussing this quickly, can you just enumerate what are the skills required to become a good sports psychologist for anybody who is aspiring to be one? तो आई थिंक which I have learned with my experience is listening ability, how you listen Very important. your client. And these are very, to be a really good psychologist or sports psychologist, listening your client is really very important, how you build rapport with your clients। ये कुछ इनिशियल ब्रीफ मैं बोलूंगा, काउंसलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि आप बातचीत करते हैं। अदर देन दैट, एक्सटेंसिवली आपको नॉलेज होनी चाहिए स्पोर्ट्स की। Hmm.
और आपने काम किया होना चाहिए स्पोर्ट्समैन के ऊपर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। कम से कम 5 साल आपने एग्जैक्टली यू स्पेंड टाइम देयर ऑन फील्ड इन स्पोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन अराउंड एथलीट्स। मैं बोलूंगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी लिसनिंग स्किल्स, आपकी एबिलिटी टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर क्लाइंट एंड मेक दैट प्रोफेशनल डिसीजन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इस इंफॉर्मेशन का करना क्या है, कैसे आप हेल्प कर सकते हो एथलीट को, और उसको क्या इशू है। और इशू नहीं भी है, कुछ आते हैं आपके पास परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट के लिए आते हैं, डेवलपमेंट, जिसको अकॉर्डिंग टू वन दिस असेसमेंट, व्हाट आई से द फ्रेमवर्क विच आई फॉलो। तो उसमें कैटेगरीज होती हैं एथलीट्स की, तो देर आर कैटेगरी ऑफ परफॉर्मेंस डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस डिसफंक्शन, परफॉर्मेंस इम्पेयरमेंट एंड टर्मिनेशन। तो आप कैटेगराइज करते हो एथलीट को एंड देन यू वर्क अराउंड। So, Karan, before we conclude this Ek Samvaad with you, is there a message you would like to share regarding sports psychology and the role it plays? So actually, yes, on this auspicious day of this National Sports Day, remembering legend Dhyan Chand ji, the hockey wizard. तो मेरा तो जो मैसेज रहेगा वो सबके लिए है, बडिंग स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के लिए रहेगा कि work on your knowledge and skills. There are opportunities for you waiting, and you first work for few years. Seek some mentorship program in India, or internship program. Just work actually. Initial few years work करो, और धीरे धीरे आई थिंक विद द टाइम आपको खुद ही रियलाइज होगा दैट यू आर डेवलपिंग योर स्किल्स। And for parents, I think my message would be that psychology is very, very, very important. और आप अपने जो seriously, they're looking sports as a career for their kids, और उनको लगता है कि उनका बच्चा भी interested है, I think sports psychologists are really going to help you in a very big way. आप जब स्टार्ट करते हो तब से, और उनके साथ एक लंबा आपको टाइम तक आपको काम करना चाहिए, नॉट फॉर इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन और शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए नहीं काम करना, लॉन्ग टर्म के लिए आपको स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के साथ काम करना है। 5 साल 6 साल तक चलता रहना चाहिए वो आपका प्रोग्राम उसके साथ। और ऐसा नहीं है होना चाहिए कि हाँ, आपको ये नहीं सोचना है पेरेंट्स को कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट पकड़ा है तो बस सब तो जादू हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। और कोचेस के लिए भी है, अब तो उन्होंने देख ही लिया कि मैं जलवा ही बोलूंगा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी वालों का, हमारी शूटिंग के कितने मेडल आए हैं। तो शूटिंग में ओलंपिक में सबसे बड़ा कंटिंजेंट गया था स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का, आई थिंक 6-7 स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट गए थे शूटिंग के साथ। तो शूटिंग में डॉक्टर पेरे जो है वो एचपीडी है, खुद हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर है, और एथलीट्स ने, शूटर्स ने भी एक्नॉलेज किया साइकोलॉजी। बोलने को वो हैं सिर्फ साइकोलॉजी शूटिंग में इम्पोर्टेंट है, शूटिंग में इम्पोर्टेंट नहीं है, कोचेस को मैं बता दूं हर जगह ही इम्पोर्टेंट है। और आप एक साइकोलॉजिस्ट के साथ एक रिलेशन बना के और अपने टीम में इसको साथ में रखें, आपको बहुत मेजर हेल्प होगा। कोचेस के लिए तो मैं ये बोलूंगा, एथलीट्स के लिए ऑब्वियसली है मैसेज के, बट आई थिंक कोचेस और पेरेंट्स एंड बडिंग स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट लिए मेरा मैसेज रहेगा ऑन दिस डे। So, on behalf of Arunima Ankuran, thank you so much, Karanbir, for being here. We wish you all the very best. And आप हमारे देश के sports persons को help कर रहे हैं. Our gratitude and best wishes for your future. Keep doing the great work. And as an Indian who loves sports, thank you for your services. All the best. Thank you, ma'am, for having me on your channel, ma'am. Thank you, Karan. Especially among the coaches and the parents.